नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। क्या राहुल गांधी को जेल होने वाली है? क्या राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से फैसला जो उनके हक में नहीं आने वाला है, क्या उनको राहत नहीं मिलने वाली है? क्या उनका वही हाल होने वाला है जो मनीष सिसोदिया का हाल होने वाला है? चलिए दर्शकों, जरा इसको बारीक से बताते हैं। मामला ये है कि मोदी सर ने मामले में जो राहुल गांधी का हाल हुआ है, शायद ही आज तक किसी नेता का हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे 2024 के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, राहुल गांधी ही नहीं, पूरे विपक्ष को ये बात चुभ रहा है कि मोदी वर्सेस आखिर किसकी लड़ाई होगी, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? चलिए सबसे पहले तो इस बात को आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी को जेल होगी नहीं, ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। जरा गौर से सुनिए आप। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए। एक एक करके प्लीज। हाँ मोहित, I'll say it in English also. Sorry. I'll say it in English also. The question begins few weeks back in Parliament, where I asked the Prime Minister a very specific set of questions. Question number 1, 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. Second question was set of questions with proof. What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? I showed a picture of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing. I gave documentation about the defense industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank chairman in Australia. And I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the Speaker with a detailed explanation on the defense industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech, I have not invented this. This is detailed research, here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Kharge. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification, and all these statements are to distract from the central question, whose money is it?
20,000 crores, whose is it, kiska hai ye? That's the main question. The whole thing is to distract. So, they said that I've asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the Speaker and I said, Speaker, sir, it is my right as a member of Parliament, when somebody makes an accusation, to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details, saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the Speaker's chamber and I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The Speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. Right? So this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question: whose 20,000 crore rupees, whose $3 billion went to Mr. Adani shell companies? हाँ जी मोहित, एक मिनट, सबको राहुल मौका जी, मिलेगा। राहुल जी, मोहित दुबे हूं मैं। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों By the way, sorry, I just need to finish that. I left out a part. Look, I'm here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I'm not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question: what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of Resurgent Gujarat, organized all that. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं। आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। हाँ जी अनवर, देखा आपने राहुल गांधी ने किस तरीके से बताया कि आखिर क्या वजह रही कि मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द करवाई, क्या वजह रही कि 2 साल की सजा हुई और क्या वजह है कि अब तक वो जेल में नहीं है। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, गुजरात कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित तो रख लिया है, लेकिन कांग्रेस की तमाम जो लीगल टीम और वकील है ये कह रहे हैं कि हम कानूनी रूप से कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की जीत होगी, लेकिन अब तक ना ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ना ही इनकी सदस्यता वापस हो पाई है। लिहाजा ऐसे में सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है और ऐसे में राहुल गांधी अगर सदस्यता वापस नहीं हो पाएगी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा और वो जेल में रहेंगे तो फिर कांग्रेस का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी को जानबूझकर मोदी सरकार ने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या बीजेपी इसका खुलासा कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।